एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, नाउ let's see what we have to do in this first question. So identify the terms, the coefficients for each of the following expressions. ठीक है, we have to find the terms. ठीक है, we have to find the terms from each of the following parts, the coefficients as well. ठीक है, हर एक terms में से coefficient भी find करना है इन सारे expressions में से. ठीक है, so let's get started. Okay, so this is the first part, so let's get started. What we have in this first part, 5xyz square minus 3z y. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं. व्हाट आर दोज दो टर्म्स? व्हाट आर दोज टू टर्म्स? फर्स्ट वन वी हैव इज 5xyz square and the second one we have is minus 3, just a second, minus 3zy. ठीक है, so these are the two terms we have and guys don't forget to even write this minus over here. ठीक है, minus 3zy लिखना guys बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because minus भी 3zy जो टर्म है उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है माइनस. ठीक है, नाउ हमने दो टर्म्स फाइंड कर दिए विच आर फर्स्ट वन इज 5xyz स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज minus 3zy. ठीक है, अब हम कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं. कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज बेसिकली एनी न्यूमेरिकल फैक्टर. ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ एनी टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है. लेट्स फाइंड द न्यूमेरिकल फैक्टर्स. उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टर्म इनटू इट्स फैक्टर्स. सो आई वुड गेट 5xyz and since the power of z is 2 over here we have to write z twice. ठीक है, so हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 5z y z and z. ठीक है, अब यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर कौन सा है? 5. सो दैट मीन्स कोएफिशिएंट हमारा क्या हो गया? आई विल राइट दिस फॉर कोएफिशिएंट. हमारा क्या हो गया? 5. ठीक है, in the second one if I would just distribute it I would get minus 3z and y. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट क्या है? minus 3. so here the coefficient we have is minus 3. ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया थोड़ा सा. ठीक है, so we have solved the first part. Let's move to the next one. Okay, so the second one is 1 plus x square. so इनमें अगर हम टर्म सेपरेट करें सो आई वुड जस्ट रिमूव दीज ऑपरेशंस. ठीक है, इन एक्चुअली नॉट रिमूव दिस ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस पे सबसे पहले फोकस करेंगे एंड इन ऑपरेशंस के राइट में एंड लेफ्ट में जो भी टर्म्स होंगे, ठीक है, जो भी टर्म्स होंगे दैट वुड बी अवर टर्म्स. नाउ फर्स्ट टर्म वी हैव इज 1, सेकेंड वी हैव इज x, थर्ड वी हैव इज x स्क्वायर. ठीक है, अगर हम 1 को उसके उसके फैक्टर्स में डिवाइड करें इट वुड बी 1 and 1 only because 1 into 1 is 1. x को करें अगेन x and 1 because x into 1 is 1x which is equal to x only. that doesn't makes a difference. but अगर हम x को ही x स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करें उसके फैक्टर्स में आई वुड गेट, बिकॉज x की पावर 2 है सो आई वुड राइट x and x. ठीक है, एंड दे बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1. ठीक है, बिकॉज किसी भी चीज़ को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सबके फैक्टर्स लिख दिए. अब हमने यहाँ पे बेसिकली फैक्टर्स तो डिस्ट्रीब्यूट टर्म्स तो हमको सबके मिल गए हैं ना. इस एक्सप्रेशन के हमें टर्म्स तो मिल गए. सो एक्सप्रेशन के टर्म्स क्या है? 1x एंड x स्क्वायर. इसके फैक्टर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सारे टर्म्स को उसके फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हम फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट. फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट 1 ही होगा, सेकंड वाले का क्या होगा? 1 बिकॉज x इंटू 1. ठीक है, सो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? 1. थर्ड वाले में क्या है? अगेन 1. सो मतलब इन तीनों का कोएफिशिएंट क्या है? 1 एंड 1. ठीक है, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड वाले में आपके पास कोई सी भी कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ था, सो यू हैव टू जस्ट राइट 1. ठीक है, सो वी हैव डन द सेकंड पार्ट एज वेल. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. Okay, so the third one we have is 4x square y square minus 4x square y square z square plus z square. ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी कि अगर हम इन ऑपरेशंस से इन सबको सेपरेट करें आई वुड गेट दिस, आई वुड गेट दिस एंड आई वुड गेट दिस. ठीक है, सो लेट्स डिवाइड दीज टर्म्स इनटू देयर फैक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो 4x square y square. सो फर्स्ट टर्म हमको दिख रहा है 4. सेकेंड टर्म वी हैव इज x.
थर्ड भी x होगा, क्यों? बिकॉज x की पावर 2 है, ठीक है. देन वी हैव y, अगेन y की पावर 2 है, सो अगेन y. सो यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इन द सेकेंड वन वी हैव, सेकेंड टर्म वी हैव, एक्चुअली सेकेंड टर्म इज -4x² y² z², ठीक है. वी डोंट हैव टू फॉरगेट दिस माइनस साइन, ठीक है. सो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, -4, second would be x, third would be again x, since the power of x is 2, again y, z and z, ठीक है. Now these are the factors of this term. Let's see the last one. We have z², that means z and z. Okay, so we have written the factors of all the terms. Now let's find their coefficients. ठीक है. फर्स्ट वाले में हमें दिख रहा है 4 इज ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स 4 वुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, ठीक है. इन द सेकेंड वन वी हैव -4, ठीक है. एंड इन द थर्ड वन, सिंस यहाँ पे कोई सा भी कोएफिशिएंट नहीं, कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सो वी विल जस्ट राइट 1 एज इट्स वन मोर फैक्टर एंड देयरफॉर 1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Okay, so the next one we have is 3 minus pq plus qr minus rp, ठीक है. Now this question might confuse all of you, but let's see how to solve this. Okay, so यहाँ पे हमारे पास है 3. Okay, सबसे पहले टर्म सेपरेट करते हैं, ठीक है. तो इन ऑपरेशन के थ्रू हम सारे को सेपरेट करते हैं, सारे टर्म्स को सेपरेट करते हैं इन ऑपरेशन के के थ्रू. So we would have the first term to be 3. So I'll just make square over it, okay. So I have 3, then I have minus pq, then I have plus qr, then I have minus rp, ठीक है. Now let's okay, so यहाँ पे हमने terms separate कर दिए. Now let's distribute these terms into their factors. So first वाला हमारा 3 ही होगा, because since we don't have any other variable. Second वाला we would have minus p and q. In the third one we would have q and r. And one more thing, guys, we don't have to write the variables in capital letters, okay. Always write the variables in small letters. In the fourth one we have minus r and p, okay. Now we have separated these terms into their factors. Now first वाले में तो हमारे पास 3 है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा. सेकेंड वाले में we would have 1, ठीक है. सिंस वी डोंट हैव एनी कोएफिशिएंट रिटर्न ओवर हियर, तो हम इसको 1 कोएफिशिएंट इसका 1 ले लेंगे. क्यों? बिकॉज अगर हम माइनस पी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी वुड हैव माइनस पी क्यू ओनली, ठीक है. Now in the third one again we don't have any coefficient, so again 1 would be the coefficient. And again in the fourth one we don't have any coefficient, so 1 would be the coefficient of fourth one, third one and the second one, okay. Okay, now in the fifth part we have x upon 2 plus y upon 2 minus xy. So let's distribute it into its prime factor, not prime factors, factors. So in the first, okay, let's first separate the terms. So if I would separate the first and the second by plus sign, I would get x upon 2 and y upon 2, and the third term would automatically be minus xy, okay. Now in the first term we would have x and 1 upon 2. In the second one we would have y and 1 upon 2. In the fourth one we would in the third one we would have minus x and y, okay. So we have separated them into its factors. Now let's find the coefficient, okay. So first वाले में we have 1 upon 2, which is a numerical value, that means 1 upon 2 is the coefficient of x upon 2, okay. In the second one we again have 1 upon 2 as the factor, as a coefficient. And in the third one we don't have any coefficient written over here, so I'll just imagine 1 to be here, so minus 1 would be the coefficient, okay. So this was the fifth part. Let's move to the sixth one. Okay, now the sixth one we have is 0.3a minus 0.6ab plus 0.5b, okay. Okay, now let's separate the terms. So first term would be 0.3a, second would be minus, let me just do like this. First one would be 0.3a, second one would be 0.6ab, and the third one would be 0.5b, okay. Now let's find the coefficient. First of all, let's divide it into its prime factors. So I will just have two factors. First one would be 0.3 and the second one would be a. Again minus 0.6 a and b. In the third one we would have
0.5, 0.5 and b. Okay, now in the first one the numerical value which we have is 0.3, in the second one we have minus 0.6, and in the third one we have 0.5. So with this question we completed the first question, with this part we completed the first question of this exercise. Now let's see the next one. Okay, now classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomial do not fit in any of these three categories? Now here we are given with some expressions, and we have to classify them into monomial, binomial and trinomial, and the expression which do not fit in any of these three would be what? Would be polynomial. Okay, now let's do that. So the first one we have is x plus y. Here I can see that we have x plus y. Okay, we have, if I would just separate it by this plus sign, we would have x and y as the two terms. Okay, so x and y, we have two terms, so it would be what? It would be binomial. Now the second one would be, okay, the second one is 1000. 1000 is just one term, so it is monomial. Now the third one we have is x plus x square plus x cube plus x raised to the power 4. Here we have four terms, that means this is a polynomial. Okay, now 7 plus y plus 5x would be three terms, so here we have trinomial. Now 2y minus 3y square, we have a monomial, since we have only two terms. Then we have 2y minus 3y square plus 4y cube. Okay, so we have three terms, that means trinomial. Now 5x minus 4y plus 3xy, again three terms, that means again we have a trinomial. Okay, now 4x minus 15z square. Okay, यहाँ पे we have z as a common variable, but in the second term we have z raised to the power 2. That means the power is not same. So that's why we would have consider this as binomial. Okay, now ab plus bc plus cd plus da. Okay, so here again we have four terms, so it would be polynomial. Then we have pqr, monomial, p square q plus pq square. Okay, so this is a binomial since we have two terms. Then we have 2p plus 2q, again we have binomial having two terms. Okay, so I hope these two questions were clear to all of you. If you guys have any confusion, feel free to ask me in the comment section. Till the time, bye bye.